Hello students, standard 7, subject computer. So children, we are learning lesson number 3, algorithm development and introduction, right? So in last video we learned regarding algorithm and flowchart, right? And the symbols used in the flowchart. So now we will go ahead. Our next topic, page number 88. Now we will write some algorithms and draw some flowcharts, right? Okay, so children, first example is find the sum of two numbers. Okay children, example number 1, find the sum of two numbers. So here we have to find the sum of two numbers, children. So first of all you have to identify the problem. Okay, what is the problem that you have to identify, and then after you have to think about the requirements. Okay, so which inputs are needed here to solve your problem. So here you have to find the sum of two numbers, right? So two variables you have to take as an input, right? You have to take two variables as an input. Then after you have to add these two numbers, and then after you will get the output, that is the sum of two numbers, right? So what will be your calculation? First of all, input. So we are taking variable A and B as an input, right? Here you can take any variable, children. Variable means vary plus able. The values of variable that can be changed during the program, right? So you can take any variable as an input. You can take A, B, X, Y, Z, P, Q, R, whatever, right? So here we are taking A and B, two variable as input, right? Now then after, here you have to find the sum. It means total, right? So you have to do addition here. Okay, you have to do addition. So your process will be C is equal to A plus B. This is your process. Okay, this is the process of addition, because you have to find the sum of two numbers, right? So calculation is C is equal to A plus B, right? And what is the meaning of this statement? Now here you are adding two numbers A and B and store the result of this addition in variable C. ठीक है, इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पे A एंड B टू वेरिएबल्स का यहाँ पे टोटल होगा, और वो जो टोटल है, ठीक है, टोटल की वैल्यू है वो किस में स्टोर होगी? वेरिएबल C में, राइट? वेरिएबल C दैट इज द अनदर वेरिएबल. ओके, नाउ हमने ये कैलकुलेशन कर लिया है, ठीक है. अब लास्ट स्टेप क्या रहा? आउटपुट. ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ addition of A and B that will be stored in variable C. So now we have to print the value of C, right? तो हम last step में यहाँ पे फ्लो चार्ट में क्या लिखेंगे? Print the value of C and that will be your output. आपका output क्या रहेगा? C. ठीक है, क्योंकि C के अंदर हमने क्या स्टोर किया है? A और B दोनों का एडिशन. That you have to understand, right? तो आपको ऐसा एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जिसमें आपको टू वेरिएबल्स का सम आपको प्रिंट करवाना है. ओके, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3, राइट? सो A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3. नाउ C इज इक्वल टू A प्लस B. So is equal to what is A? 2. What is B? 3. 2 plus 3 that is 5. So C is equal to what? C is equal to 5. And you have to print the value of C, that is the 5. ठीक है,
So in this way you have to solve the examples, right children? So this is the explanation. Now first of all we will write the algorithm, right? Algorithm step by step. So step number 1 is take two numbers A and B as input. That is the step number 1. Step number 2, add the two numbers, right, and store the value in variable C. And then after step number 3, print or display the value of C, right? So these are the three basic steps that you have to follow. Now we will draw flowchart. Okay. Now first begin the process. So terminal is used to start the process. Begin. ठीक है, आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे begin ऐसे ही आपको सारे flowcharts स्टार्ट करना है, right? This will show your process is start. Now then after आपको दो वेरिएबल इनपुट लेने हैं, ठीक है? Because you have to add two numbers, तो आपको दो नंबर चाहिए, ठीक है? तो वो दो नंबर आप एज एन इनपुट करोगे, ठीक है? सो हियर यू हैव टू राइट इनपुट ए एंड बी, राइट? नाउ देन आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है? आप जो इनपुट करोगे उसके लिए आपको क्या यूज करना है? पैरेललोग्राम चिल्ड्रन, ठीक है? मैंने लास्ट टाइम आपको सिंबल्स, ठीक है, हमने लर्न किया था सिंबल्स। तो इनपुट करने के लिए क्या यूज होता है? पैरेललोग्राम, राइट? नाउ देन आफ्टर कैलकुलेशन यानी कि प्रोसेस शो करना है तो हमें क्या यूज करना होगा? रेक्टेंगल. सो यू हैव टू यूज रेक्टेंगल हियर एंड यू हैव टू राइट C इज इक्वल टू A प्लस B, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है. एडिशन इट मीन्स कैलकुलेशन. सो calculation it means this is the process and that's why you have to write in rectangle, right? Now then after again पैरेललोग्राम, क्योंकि आपको वैल्यू प्रिंट करवाना है. इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए आपको पैरेललोग्राम यूज करना है, राइट? इट मीन्स ये शेप आपको यूज करना है, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे? वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे. हमने एडिशन कर लिया है, ठीक है? और A और B का एडिशन किस में स्टोर हो रहा है? C के अंदर. C दैट इज द अनदर वेरिएबल, राइट? तो हमें कौन सी वैल्यू प्रिंट करवानी है? द वैल्यू ऑफ C, बिकॉज C के अंदर ही टोटल है, राइट? C इज इक्वल टू A प्लस B और हमें क्या फाइंड करना है? सम. So now we will print the value of C children, okay? और print के लिए आपको print वर्ड यूज करना है आउटपुट के लिए, right? So print C, ठीक है? Print the value of C. So print C and then after here you have to end this process. You have to use terminal again. Start और end के लिए always you have to use terminals. Remember, okay? Begin and end. And in between you have to draw the different shapes like parallelogram, right, for input and output. Then after rectangle for process and diamond shape that is used for condition checking. We will see example of it later, but you have to remember diamond shape that is used for condition checking. So in this way you have to draw the flowchart, right children? It is very easy, very simple example. I hope you must have understood children, right? Okay? So you have to draw this flowchart in your CW book. Children, draw fast.
So now children, we will see next example, right? Our next example is example number 2. Find the product of three numbers. Right children, here you have to find the product of three numbers. ठीक है, आपको थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है, वेरी सिंपल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी algorithms. Step number 1, you have to take three variables as an input. Okay, for example we are taking x, y and z. You can take p, q, r also, whatever you like, right? So here we are taking x, y, z as three variables as an input, right? This is our first step. Second step, that is the process. Okay, here we have to do multiplication because we have to find the product, and product that means multiplication. Okay, so your calculation, that is here three variables we are taking, right? Now multiplication, for example you will store in m variable. This is another variable, right? So m is equal to x multiplied by y multiplied by z. So this is your process that you have to write in rectangular box, right? Because this is the process. Okay, so step number 2 क्या होगा? m is equal to x multiplied by y multiplied by 2, multiply three numbers and store the value of this multiplication in variable y. ठीक है, ये आप ध्यान रखना चिल्ड्रन. ये स्टेटमेंट का मीनिंग होगा आपको इन दिस वे. ठीक है, फॉलो करना है पाथ. ओके, दैट इज राइट टू लेफ्ट. आपको राइट टू लेफ्ट जाना है, यानी कि x, y एंड z, ये तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में स्टोर हो रहा है? m वेरिएबल में. ठीक है, तो आपको जो असाइनमेंट है वो कैसा होगा? राइट टू लेफ्ट साइड. दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? सो दिस इज सेकंड स्टेप. एंड थर्ड स्टेप, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ m जो आपको प्रिंट करवाना है. दिस इज योर आउटपुट. ओके, सो वेरी सिंपल चिल्ड्रन. ओके, यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एल्गोरिदम. ठीक है, पहले आपको CW में एल्गोरिदम लिखना है एंड देन आफ्टर यू हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, राइट? सो नाउ वी विल ड्रॉ फ्लो चार्ट. So start with begin, terminal. Okay, then after we have to take input three variables. ठीक है, आपको तीन वेरिएबल चाहिए क्योंकि तीन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो you have to take three variables as an input, right? तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? पैरेललोग्राम. You have to use पैरेललोग्राम for input. So input x, y, z, three variables, right? Now then after you have to show the process calculation. ठीक है, कैलकुलेशन में क्या होगा? प्रोडक्ट है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो वो आपको किसमें शो करना है? रेक्टेंगल में. ठीक है, तो दिस इज रेक्टेंगल. नाउ टेक अनदर वेरिएबल m, और यू कैन टेक एनी वेरिएबल, राइट? और यू कैन टेक MUL also. Multiplication, the short form of multiplication is MUL, right? So we are taking MUL, and then after x multiplied by y multiplied by z. This is the calculation, right? Now then after calculation हो गया, x by z का multiplication जो वैल्यू होगा कहाँ पे स्टोर होगा? MUL के अंदर, ये वेरिएबल के अंदर, right? Then after you have to print the value of MUL. So print the value of MUL, right? And then after end the process. So very simple children, right? If you see example,
then x is equal to, for example, 2, y is equal to 4, and z is equal to 6, for example, right? So now MUL is equal to what? 2 multiplied by 4 multiplied by 6. 2 fours are 8. 8 fours are 48. So your answer is 48. Okay? Right? So this will be your output. ठीक है? तो आप जब प्रोग्राम रन करोगे तो आपका आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा? 48, because you are printing the value of MUL, right? And MUL is equal to what? 48. So this will be your output that we have print here, okay, in parallelogram. So this is the second example, children. So in this way you can solve many examples, children. It is very easy method. You can write algorithms as well as you can draw the flowchart in this way, right? So first of all you have to identify the problem, then you have to think about the input variables, think about the process, calculation, and then after you have to print the output. Okay? So children, you have to draw these two flowcharts in your CW and write algorithms also. Next time we will see other examples. Thank you.